Okay, so the last part of these kind of questions is that you need to make a trial balance out of what out of the whole hard work that you've done. So basically, what trial balance is going to tell you is that the trial balance is basically going to prove the arithmetical accuracy of double entry कि हमने सब सही टोटल सही किया है, हर चीज़ सही जगह पे डाली है या नहीं डाली है, या फिर if we have gone through the process of double entry correctly, your trial balance is going to balance in the end. So the point of making a trial balance is that it helps you in checking the arithmetical accuracy of double entry of your ledgers. Also, the other advantage is that it helps you make the financial statements of the business. So financial statements में क्या क्या आता है? Income statement, very important. The other one is statement of financial position, that is also a very important statement. So both of these statements are basically very very important for accounting, and trial balance is basically going to assist you to make these statements like income statement and statement of financial position. So what you guys need to do here is that आप लोगों को एक रूल याद रखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के लिए ना हमेशा आपके डेबिट साइड पे, so you will have on the debit you will have assets listed on the debit side, you will have expenses listed on the debit side, you will have drawings listed on the debit side. Similarly, your sales returns will come on the debit side. Okay, credit side पे क्या क्या आएगा? लाइबिलिटीज़, सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आएगी लाइबिलिटीज़, ठीक है. दूसरा होगा इनकम्स, तो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो आपने इनकम्स क्रेडिट साइड पर डालनी है. फिर आपके पास आएगा कैपिटल. कैपिटल जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड कैपिटल ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड. सो इन द ट्रायल बैलेंस यू लिस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. देन यू हैव परचेजेस रिटर्न्स दैट नीड्स टू कम ऑन द क्रेडिट साइड. तो इसी तरह purchases itself will come on the debit side. Sales will come basically sales/revenue, so we call it revenue in accounting, and revenue comes on the credit side of the trial balance. So if you know this rule, so it's very easy to make your trial balance, ठीक है. अच्छा, तो what you'll do is that ये जो टी अकाउंट्स हैं जिनके अंदर हमने बैलेंसेस निकाले हैं, हमें वो बेसिकली पुट करने इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है. तो सबसे पहले हम वन बाय वन टी अकाउंट्स के साथ साथ करेंगे. सो जहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है ना, तो बैलेंस अगर ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है उसको बस डेबिट पे डाल दो. ऑल्सो ये एसेट है, बैंक एसेट है, एसेट्स कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो व्हाट आई डू हियर इज 13906. So 13906 comes on the debit side. So what I do here is I write here bank, and I write here 13906 on the debit side, ठीक है. फिर हमारे पास दूसरा टी अकाउंट जो है इम्पॉर्टेंट हियर इज कैश, और उसका आप बैलेंस देखें, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है ऑन द डेबिट साइड 8565. सो उसको हम डेबिट पे डाल देंगे. ट्रायल बैलेंस में हम यहाँ पे लिख देंगे कैश, और हम यहाँ लिख देंगे 8565. फिर हमारे पास कौन सा है अकाउंट? तो फिर हमारे पास अकाउंट आ रहा है कैपिटल का, और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड. एंड आई टोल्ड यू कैपिटल ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो आई विल सिंपली पुट 22,500 ऑन द क्रेडिट साइड. सो आई विल राइट हियर कैपिटल, and I'll write here 22,500. Then I have loan from our Hughes, जो कि मेरी liability है. Liabilities come on the credit side, and that was 5,000. ओके, परचेजेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है ऑन द डेबिट साइड, तो परचेजेस को हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 6570. मैं यहाँ पे लिखूँगी परचेजेस, एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6570. इसी तरह मेरा नेक्स्ट टी अकाउंट जो है, फॉर नाउ आई एम जस्ट इग्नोरिंग ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवर्स, आई विल डू इट इन द एंड. बट सी हियर नाउ नेक्स्ट अकाउंट इज सेल्स 4532 है, तो 4532 में एज रेवेन्यू, और यू कैन राइट सेल्स एज वेल, दैट्स नॉट एन इशू. यहाँ पे आपने 4532 लिख दिया एज रेवेन्यू. देन द नेक्स्ट टी अकाउंट हियर इज वी हैव सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न्स में डेबिट साइड पे लिख दूंगी. And I told you guys as well कि sales returns always comes on the debit side. Sales returns will be 99 here. उसके बाद हमारा कौन सा टी अकाउंट है? उसके बाद है okay, so we have office furniture as a T account, and 1985 is my balance. So I'll write here office furniture.
and I'll write 1985 on the debit side because office furniture is also my asset. ठीक है, इसी तरह हमारे पास वैन का अकाउंट है और वैन के अंदर बैलेंस इज 4370. सो आई विल सिंपली राइट हियर वैन and I'll write 4370 on the debit side. This is also my asset. Similarly मेरे पास यहाँ पे account है. One second, I'm not dealing with the trade payable, trade receivable for the time being, but I'll soon deal with it. एक purchases returns का account है most probably, so I have to record that as well. Purchases returns is 224 and that will be recorded on the credit side. तो मैं यहाँ लिख दूँगी purchases returns. I will write 224 on the credit side. Now what I have to do is that I need to जिसको भी मैंने inventory sell की on credit, तो वो कौन कौन है that मैंने I have highlighted it with orange. Who is my trade receivable? So trade receivable is H Rise. H Rise का balance है, let me make a total here. So H Rise balance is 1309 plus P Taylor का balance है 341 प्लस मेरे पास एक और 501 इज़ फॉर जी पेड बैलेंस. ठीक है, सारे ट्रेड रिसीवल्स हैं, मैं ट्रेड रिसीवल्स को क्लब करके लिख रही हूँ. ठीक है, एक साथ सारे ट्रेड रिसीवल्स, अलग अलग नाम लिखने की जगह आई जस्ट राइट दीज टू वर्ड्स ट्रेड रिसीवल्स और उसके साथ में टोटल ट्रेड रिसीवल्स लिख दूँगी यहाँ पे. सो 262 इज़ फॉर आर सिम, सो आई राइट हियर 262. फिर मैं इसको जो है वो इन सबको ऐड करूँगी. So basically I have 4 trade receivables here, RSM, GPATE, H Rise and P Taylor. So basically I need to add all of them. So I'll simply take my calculator and my calculator looks like this. You guys most probably have a similar calculator. 1309 plus 341 plus 501 plus 262 gives me 2413 as my trade receivables. So I'll write 2413 और मैं 2413 as trade receivables लिख दूँगी on my trial balance. So I'll write here trade receivables and I'll write 2413. फिर मेरे trade payables are very important, so I'll have again trade payables. I need to total the trade payables. So trade payables कौन कौन है मेरे? So B Brown was my trade payable, but I had paid everything to B Brown. Whatever was due was paid to B Brown. So B Brown is not going to be taken to the trial balance because now we don't have to pay him anymore. ठीक है, IGCSE को हम trial balance पे ले जाएंगे. तो IGCSE का जो trade payable है is 4032. So what I do here, I total here my trade payables. 4032 is IGCSE plus I have trade payables. So I just had 2 trade payables. So B Brown was my trade payable and the other one was IGCSE. एंड उसके अलावा तो बी ब्राउन को पे कर दिया था. IGCSE जो है वो 4032 है. तो ओके, माई ट्रेड पेबल्स इज 4032. सो आई जस्ट रिकॉर्ड दैट इन माई ट्रायल बैलेंस. ट्रेड पेबल्स 4032 ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज ट्रेड पेबल्स इज योर लाइबिलिटी. फिर हमारे पास अकाउंट्स पेबल की लाइबिलिटी रह गई. अबरदीन कार्स वॉज नॉट दैट वन बिकॉज अबरदीन कार्स को हम पे कर चुके थे. अकाउंट्स पेबल हमारे पास ये है, J Winter Limited. Why am I calling them accounts payable? Because J Winter Limited is not उनसे हमने जो है वो उधार पे ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है, उनसे हमने उधार पे इन्वेंट्री नहीं ख़रीदी. तो हम यहाँ पे 1620 लिखेंगे एज माई अकाउंट्स पेबल एंड दिस विल बी on the credit side. So I'll write here accounts payable and I'll write here 1620 on the credit side. I am hoping इसके अलावा हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है जो बच गया है. All of them have been taken. So sales has been taken, IGCSE ले लिया, purchases ले लिया है, फिर हमने capital ले लिया, loan from our Hughes ले लिया, bank ले लिया, cash ले लिया. Now simply what I have to do is that I need to total trial balance in my calculator. So 13906 plus 8565 plus 6570 plus 99 plus 1985 plus 4370 plus 2413 gives me
37,908 for the debit side. I'll check that if I have the same on the credit side. I should have it same, because then that tells me कि वो मैंने double entry सही की है. So 22,500 plus 5,000 plus 4532 plus 224 plus 4032 plus 1620, and that is again 337,908. So I am happy my trial balance is balanced, and जो भी मेहनत की है, so basically सारी ठीक की है. 137,908 आ गया दोनों साइड पे, and my trial balance has balanced. So this was the last step of the basic double entry. So basically putting transactions into T accounts and calculating balances and then making a trial balance. So thank you so much for watching, guys.